last class we discussed that how e-commerce is evolving and what is the history behind the e-commerce and how it has penetrated our lives. Today we will be discussing upon its technical components, and then we will discuss that what all are the applications and what is the framework of e-commerce. Last class we discussed that what is the definition of e-commerce, what is the scope of e-commerce, discussed upon the timeline, the history and evolution. Then we also discussed that what is the difference between the e-commerce and e-business. E-commerce is just a part of e-business, and e-business activities involve other things as well, like how you are dealing with your suppliers, your distributors, your government, and other stakeholders. Then we discussed that what are the advantages of e-commerce. It is easy to set up, we have flexible hours there, and there are many other advantages. Then we also discussed upon the disadvantages, that sometimes we find it difficult to have a personal touch with the seller, and that is why there is a lack of trust. So these are the disadvantages of e-commerce. Today we will discuss that what is the need of e-commerce. So e-commerce basically helps in cost reduction. As we discussed in the last class, that you don't need to set up an infrastructure in order to have a business. Unlike the normal commerce where you need to have a building, you need to have a manufacturing unit, you need to have a showroom, etc. Here you don't need to have such things. You just need to have a laptop or a computer with you. You just need to have an internet connection, and then you are ready to go. So that is how it helps in the cost reduction. Second, e-commerce helps in customer satisfaction. That means sometimes we are not able to penetrate to a larger market through the normal commerce. But when we are doing the e-commerce, we can have an access to a larger market and we can build a trust. For example, Amazon is not an Indian company, but still we rely upon Amazon for our day-to-day needs because we have created a kind of satisfaction for ourselves. That satisfaction is just because of their services they provide to their customers. They have good services, they deliver in time, even they have good policies like return and exchange policies. So that is why sometimes e-commerce helps in the customer satisfaction that is not otherwise provided by other sellers. E-commerce helps to acquire just-in-time information. Unlike the physical infrastructure, अगर आपकी कोई शॉप है, शॉप पर कोई आ रहा है, आपसे कोई सामान खरीद कर लेकर जा रहा है, तो उसके बाद जब तक वो नेक्स्ट टाइम नहीं आ जाता, आपको उसका फीडबैक नहीं मिलेगा, बिकॉज वो अच्छा लगा, बुरा लगा. They do not have any platform to show their emotions related to your product. But when it comes to the e-commerce, you have an access to the information, and at the same time you can write your comments, your feedback and your reviews there on the site. So here they can acquire just in time information. Like information बहुत जल्दी मिल जाती है आपको भी, और जो सेलर है उसको भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. Another example, suppose आपको शूज खरीदने हैं. अब शूज खरीदने के लिए अगर आप जाकर अलग अलग शोरूम में प्राइस पता करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर इतने का मिल रहा है, वहां पर इतने का मिल रहा है, it will take a lot of time of yours and efforts and of course the energy. But अगर आप यही चीज e-commerce platforms पे कर रहे हैं, it will just take a minute and you can have a look over the shoes of same model on Flipkart, Amazon, and then you can easily compare them. So that is why here you have just-in-time information. Next point. E-commerce helps in transaction efficiency. When we
dealing in the offline mode, then there can be transactions where you would forget to take money or something like that. But when it comes to e-commerce and you are making the e-payment, it would be easier for you to have a track over your transactions. आप पिछले एक महीने एक साल के ट्रांजैक्शन इजीली जस्ट इन अ क्लिक निकाल सकते हैं, जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कॉमर्स में. नेक्स्ट पॉइंट, ease of access to global market through e-commerce. अगर आपको अपना कोई भी प्रोडक्ट है वो एक फिजिकल शॉप के थ्रू बेचना है, तो you cannot think of the global market. Do you really think people who are living in USA would come to your shop and purchase? It is just next to impossible. But here, if you do business through e-commerce channels, e-commerce platforms, then you can have an access to the global market, and people who are living in Mumbai, Kolkata, even in US, they can purchase your products. So that is how you can have an access to a broader market. So this is what emerges the need of e-commerce. Why there is a need of e-commerce? Because it helps in certain things. Now we'll discuss about the technical components of e-commerce. What all are the components? So what all are the terminologies involved in e-commerce? So first of all, we have the client or PC workstation. Who is a client or PC workstation? Suppose I'm doing a business or I am the customer. So whenever I am sending any request to the server, I become the client. Suppose you are searching for something over Google. अब Google पे आपने कोई वर्ड टाइप किया है, आपको उसका मीनिंग चाहिए, तो कैसे वो काम करता है? जैसे ही आप सर्च बॉक्स में, सर्च इंजन में जाकर कोई भी वर्ड टाइप करते हैं, तो वो सीधा रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को कि आप उसका मीनिंग दीजिए. रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट एक्सेस होती है, एंड देन इट गिव्स यू मेनी रिजल्ट्स. So a client is someone who is making request for an access. Second है सर्वर. अभी मैंने आपको पहली डेफिनेशन में सर्वर बताया, जो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसके रिजल्ट्स देता है. So client is making the request and server is fulfilling the request. Then we have transmission media. Transmission media is a kind of optical fiber, और या फिर अगर वायर के थ्रू कुछ चीज जुड़ी हुई है, तो जो चीज उस ट्रांसमिशन में हेल्प करती है. सपोज दिस इज क्लाइंट, दिस इज सर्वर, and how they are connected to each other would be known as the transmission media, because it is transferring the information or request from one place to another. Transmission media. Next, internet connection. Internet connection, you cannot have an access to server or any kind of information until and unless you have an internet connection. तो आपको internet connection वो लेना पड़ता है, broadband होता है, या फिर आप फोन के hotspot के थ्रू करते हैं, या कोई भी. So that is internet connection. I don't think I need to discuss upon it much. Then we have intranet. Intranet means it has two words, intra and net. Intranet is connecting many clients within a particular organization. Suppose हम SOL में हैं सब, और हमारे कंप्यूटर्स या हमारे डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं. सपोज कोई इंफॉर्मेशन है जो वैसे अदरवाइज इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो इंट्रानेट पे अवेलेबल है. यानी हमने एक लोकल नेटवर्क बना रखा है जो सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का है, और विद इन दैट नेटवर्क एनी इंफॉर्मेशन और अ काइंड ऑफ कोई भी तरीके की जानकारी उसमें
फीड की गई है, तो उसका एक्सेस जो है वो सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को होगा। तो इफ वी बिलोंग टू SOL देन ओनली वी कैन हैव एन एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन। बाहर का कोई भी कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरीके से कंपनीज में हमारे इंट्रानेट होते हैं, जो कंपनी से रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो उसमें फीड होती है और सिर्फ कंपनी के कंप्यूटर्स का ही एक्सेस होता है। नेक्स्ट है फायरवॉल। Firewall is just like the ordinary wall. अब वॉल का क्या काम होता है? It protects us from other threats. कोई unauthorized एक्सेस ना हो हमारे कंप्यूटर पे। तो फायरवॉल आपको हेल्प करती है सिक्योरिटी में कि कोई भी ऐसा कंप्यूटर या हैकर आपकी इंफॉर्मेशन पे एक्सेस ना कर पाए। Then we have the extranet. Extranet means when any information is provided to the third party. So suppose SOL जो है उसका इंट्रानेट है, उनके पास इंफॉर्मेशन है कुछ और वो इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, तो हम एक्स्ट्रानेट को यूज करेंगे rather than using the इंटरनेट। इंटरनेट में क्या होगा? पूरी वर्ल्ड वाइड लोगों का एक्सेस हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि SOL का इंफॉर्मेशन पे एक्सेस है और वही इंफॉर्मेशन हम किसके साथ साझा कर पाए? हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ। तो हम एक एक्स्ट्रानेट क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी और SOL का एक्सेस हो पाए उस इंफॉर्मेशन पर। नेक्स्ट है इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। नाउ व्हाट आर प्रोटोकॉल्स? Protocols is a set of rules and regulations. Rules and regulations हर काम को करने के कुछ rules होते हैं। For example, आप अगर किसी एक particular website को visit करना चाहते हैं, तो आपको अपने email ID देनी पड़ेगी या फिर अपना phone number देना पड़ेगा उसको access करने के लिए, क्योंकि उसकी protocol है ये। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, it would not allow you to have an access. So that is why internet protocols are really important and they form a set of rules you have to go through in order to have an access to a piece of information. Next है proxy servers. अब proxy क्या होती है? जब आप क्लास में आपका फ्रेंड प्रेजेंट नहीं है और आप उसके बदले में प्रेजेंट मैम कह रहे हैं, दिस इज प्रॉक्सी। यहाँ पे भी प्रॉक्सी सर्वर का वही काम है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सर्वर्स बहुत बिजी हो जाते हैं, वी गेट अ हाई डिमांड। आपने देखा होगा कभी कोई रिजल्ट आता है या फिर कुछ इस तरीके की चीज होती है, जैसे CBSE का रिजल्ट आता है तो उनके सर्वर बहुत बिजी हो जाते हैं। तो कभी कभी जब हमारे सर्वर्स पे बहुत ज्यादा लोड आता है तो वी क्रिएट अ प्रॉक्सी सर्वर, जो एक सर्वर और क्लाइंट के बीच में रहकर काम करता है और कुछ इंफॉर्मेशन वहां पर भी सेव होती है। तो आपकी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन या क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर तक भेजने की बजाय वो सिर्फ प्रॉक्सी सर्वर तक भेजता है, ताकि वो वहीं से फुलफिल हो जाए और सर्वर पे ज्यादा लोड ना आए। So proxy servers are established between the client and the server. Then we have the Bastion host. Bastion host means it is a kind of gateway. Gateway क्या होता है? That allows people to come and go. Gate की तरह होता है। So यहाँ पर भी Bastion host का क्या काम है? It allows an access to a particular website. It is a gateway. You have to go through the gate in order to have an access to that particular piece of information. Suppose if you do not have authorization to go there, then the Bastion host would reply कि आपको वहां पर जाने की कोई भी एक्सेस नहीं है या आपको परमिशन नहीं है। तो जब आपके पास एरर्स आ जाते हैं, आप कोई वेबसाइट देखने की कोशिश कर रहे हैं और आपका ऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं है,
So it reverts that, okay, it is an error and you do not have permission to go there. So that is Bastion host. Next is transaction server. Transaction server is a type of server that allows you to do a transaction. So suppose you are transferring money to someone, या फिर अपने बैंक से पैसे निकालने हैं आपको, या फिर एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर करने हैं. सो जो ट्रांजैक्शन है, या फिर आपने कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर देना है, उसके बदले में पैसे देने हैं. सो जो ये ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन सर्वर करेगा, जो सिर्फ ट्रांजैक्शंस का ध्यान रखता है. वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन इट अलाउज यू टू डू अ ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट इज डेटाबेस सर्वर. इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सर्वर जहां पर आप इंफॉर्मेशन को फीड करके रखते हैं. लाइक वी हैव गूगल, वी हैव याहू, वी हैव डिफरेंट सर्च इंजन्स. तो वो सारे जब भी हम कुछ चीज सर्च करते हैं तो कहाँ से इंफॉर्मेशन लाते हैं? डेटाबेस सर्वर से, बिकॉज अ लॉट ऑफ डेटा हैज बीन फेड इनटू देयर सर्वर. दैट इज नोन एज द डेटाबेस सर्वर. एंड लास्ट थिंग इज राउटर. Router is that allows you to make a route. For example, you have to search a particular information over your laptop. तो अब जब आपने लैपटॉप पे कोई वर्ड टाइप किया है तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली गूगल के पास उसके रिजल्ट्स हों. तो वो क्या करेगा? गूगल एग्जैक्ट रिजल्ट ना देके आपको एक लिंक दे देगा. फिर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे एक और लिंक मिल जाएगा जिसमें आप डायरेक्ट भी जा सकते थे, लेकिन वो गूगल के पास था नहीं, इसीलिए आपको इनडायरेक्टली भेजा गया है. सो राउटर हेल्प्स यू टू मेक योर रूट टू अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो राउटर आपको हेल्प करेगा कि आपको किन किन चीजों पे क्लिक करके यहाँ तक पहुंचना है. सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निकल कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स. And before going for the further discussion, we should have the knowledge about these terms, because ये terms जो है वो बार बार यूज होती हैं. प्रॉक्सी सर्वर है, प्रोटोकॉल्स हैं, तो आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इसका काम क्या है. I hope it is clear. Okay, so now we'll discuss what are the different models of e-commerce. E-commerce business models. Here we have given 8 models. Earlier we used to have only 4 models. Those were B2B, B2C, C2C and C2B. You all must be aware of them. But now we have come up with few more models which are there in place, and let me discuss about them one by one. So firstly we will discuss upon the basic models. B2B model stands for business to business. So when Amazon is transacting with other sellers who are selling their products over Amazon, this transaction would be known as B2B, because the customer is not involved, only the two businesses. Amazon is also doing business, and the sellers who are selling on the Amazon platform, they are also doing the business. So when they are transacting with each other, it means that there is a transaction between businesses. Then next is B2C. When the seller is selling something to me, I'm a customer, I'm purchasing a product, or I'm accessing to a service. So I am doing it just for the purpose of consumption. I do not have any intention to resell it. That means there is a transaction between the business and the customer, and customer is the ultimate consumer of the product. This is the second model we usually see. The third model is C2C. Now the business is not involved. For example, OLX.
On OLX, we have different customers dealing with each other. None of them is doing business. Suppose I want to sell an old bicycle. So that old bicycle is not a part of my business. I do not have a business of selling bicycles, no. But I just had an old bicycle and it is of no use for me, and that is why I am selling it to the OLX. So this kind of model would be known as the customer to customer. And the last is C2B. C2B is customer to business. So when you are giving money to the business because you have purchased something, so in return you have to make a payment. So that payment would come under the purview of C2B. So when anything is going from customer to business, it can be the piece of information when you are giving details about your address, your email ID, your phone number. So when anything is going from a customer to the business, this model is C2B. Now let's talk about the new business models. These business models are B2E, G2C, C2G, and B2G. That means here we have the business to employees, government to customer, customer to government, and business to government models. Now let's discuss upon them. Business to employees means when you are providing any information, stocks, etc. to your employees. Here you are not dealing with the customers, but you are providing something to your employees. This model is known as B2E. Sometimes businesses provide the information related to the profits of the business, their stock options, their recognitions, etc. So that is business to employees model. Next, we have the government to customer model. So when any information is provided by the government to the customer, for example, these days everything has been automatized. You can have an access to the governmental information like electoral rolls, your if you have gone for a category certificate or income certificate, everything is available online. Every service is there available on their portals. So how these services are being provided to customers would be known as the government to C model, the government to customer model. Then we have customer to government model. Now how the information is given to government? Sometimes we go for the surveys. Government कुछ surveys निकालती है जिसमें कस्टमर्स को यानी जनरल पब्लिक को वो फिल करना होता है सर्वे, या फिर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, रिटर्न को फाइल करते हैं, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास भेजते हैं. सो दिस मॉडल इज नोन एज द C2G model, that is customer to government model. And then lastly we have the B2G model. So whenever the businesses are providing information to government about their profits, about their taxes, about their social responsibility, they provide information to the government and it is known as the business to government model. So these 8 models are there in e-commerce. So now we will discuss some of the types of e-commerce businesses. Firstly, we will discuss the online storefront. ऑनलाइन स्टोर फ्रंट एक ई कॉमर्स बिजनेस का टाइप है जिसमें जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेच रही होती है ऑफलाइन भी, उन्हीं की एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है जहां पर जाकर आप उन चीजों को खरीद सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू परचेज नाइकी शूज, so these Nike shoes are readily available in their showrooms. But if you don't want to visit the showroom, you can go for their another model
where they have their specific online store. You can just write Nike.com and you would be redirected to their online storefront, and there you can purchase Nike shoes and they would be delivered to your home. Online storefront, मैं आपको दिखा देती हूँ how it looks like. It is clear, it is online storefront where you can find shoes and other accessories offered by Nike, and you can purchase from them directly. There is no intermediary involved. Okay, you are purchasing directly from the Nike showroom. This is online storefront. Next we have the drop shipping. As the name suggests, here you are just dropping something, you are purchasing from someone and dropping it to any other person. For example, if Amazon is maintaining its inventory, so suppose Amazon किसी और शॉप से या किसी और मैन्युफैक्चरर से कुछ प्रोडक्ट खरीद लेता है और अपने नाम के अंडर उसे बेचता है. It is known as drop shipping because they are neither producing it nor manufacturing it. They are just purchasing the article from anybody else and providing the same thing to the customer. This is drop shipping model. Next e-commerce business model is affiliate e-commerce. Affiliate e-commerce means when somebody else is selling a particular product on the behalf of anybody else. For example, अगर मेरा कोई YouTube चैनल है, वहां पर मैं किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए लिंक बायो में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसका मतलब है दिस इज अ काइंड ऑफ एफिलिएट ई कॉमर्स, जहां पर आप किसी के बिहाफ पर वो सामान बेच रहे हैं. तो जैसे ही आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसका एक कमीशन जो है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. तो आजकल बहुत से लोग जो है Amazon के लिए एफिलिएट बने हुए हैं. वो जैसे मैंने काफी वीडियोस देखी हैं फिटनेस फ्रीक्स की, तो वो यूजुअली क्या करते हैं कि फिटनेस के लिए आपको कुछ रेसिपीज देते हैं और साथ में कुछ सप्लीमेंट्स बताते हैं और बताते हैं कि दिस सप्लीमेंट इज रियली गुड एंड यू कैन डायरेक्टली परचेज दिस सप्लीमेंट फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो. द टाइम यू क्लिक ऑन द लिंक एंड यू मेक अ परचेज, an amount would be credited to their account as well. So they are performing as an affiliate for that particular product. Next, we have the membership or subscription model. Membership or subscription model is like we have the subscription of Amazon Prime. आप किसी चीज की एक मेंबरशिप ले लेते हैं या उस सर्विस को सब्सक्राइब कर लेते हैं फॉर 1 month, फॉर 3 months और फॉर 1 year और फॉर लाइफ टाइम. जैसे YouTube में भी आपको मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन अवेलेबल है जहां पे आपको एडवर्टीजमेंट्स नहीं देखनी पड़ती. आप डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. तो जिस चीज में आपको सर्विसेज दी जाती हैं, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक सर्विस को एक्सेस करने के लिए यू हैव टू पे सम मनी. फॉर एग्जाम्पल Amazon Prime. If you are a member of Amazon Prime, you can have many benefits. For example, आपको प्रायोरिटी बेसिस पे डिलीवरी दी जाएगी. There would not be any delivery charges. You have an access to the Prime videos and Prime music. So that is how
you can become a member and you can have an access to their services. This is also one model that is being followed by e-commerce platforms. Now we have next model, that is e-marketplace. E-marketplace is just like a normal marketplace जहाँ पर आप चीजें जाकर अलग-अलग sellers होते हैं and you can just go and purchase from them. So the best example can be Amazon, Flipkart, Myntra and other such kind of channels where other sellers are involved. It is just connecting you and a seller. It is just a platform. Platform अपनी तरफ से, हाँ Amazon कुछ चीजें अपनी तरफ से बेचता है, लेकिन there would be many sellers also. So जहाँ पे हम एक platform पर sellers और buyers को लाकर मिला दें, that is known as e-marketplace. And finally we have e-services. E-services means you have certain services available in electronic form, or the physical services are also being booked in the electronic form. For example, we have the services of Ola and Uber. अब Ola and Uber की services तो आपको physically मिल रही हैं, कार physically आकर आपको लेकर जाएगी, लेकिन उसकी जो booking है, उसकी payment है, everything is being done online. So this is also a model where you provide a service. That service can be online or offline. अभी कैब सर्विस है वो ऑफलाइन है. आपको अगर कोई कंसल्टेशन सर्विस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रैक्टो की बात करूं, तो प्रैक्टो में आपको सर्विस दी जा रही है, लेकिन वो भी ऑनलाइन डिलीवर की जा रही है. तो कुछ सर्विसेज जो है वो ऑफलाइन डिलीवर की जाती हैं, कुछ ऑनलाइन डिलीवर की जाती हैं. But when a service is being delivered using any electronic platform or it is being booked using an electronic form is known as the e-service platform. So marketplace और services में यही difference है. E-marketplace में आपको products मिलेंगे, e-services में आपको services मिलेंगे. Now we have some other classifications as well. For example, we have the brokerage model. Brokerage model means here you are acting like an intermediary. Intermediary means you are getting information or services from one place and transferring it to the another place. For example, PayPal क्या करता है, उनके पास अपना कोई बैंक नहीं है. It just allows you to make a transaction, and here different parties are involved, like the bank of the receiver, the bank of the giver. Okay, and they both are involved in a transaction and PayPal is just facilitating them. So a brokerage model is something where a company facilitates your transaction and they just work upon the commission basis. Next is the advertising model. Now advertising model, here you are not selling anything, but you are making money from the advertisements or advertisers. For example, whenever we search anything over Google, it does not ask for the money. Advertisement के जरिए ही पैसा कमा रहे हैं Google. अब आपको क्या लगता है कि आपको फ्री में इंफॉर्मेशन दी जाती है? So there is one rule of business. When something is being provided you for the free, just think that you are the product. कोई चीज आपको जब फ्री में दी जा रही है, then that product does not worth it. You are the product. So आपको जब कोई piece of information free में दिया जा रहा है, that means they want something else from you. They want to show the advertisements so that you can be attracted to them. So whenever you search something over Google, there would be many advertisements and they are making money from the advertisers. This is advertisement model. Next we have the intermediary model. Intermediary मतलब क्या होता है कि आपको information provide की जाती है. Like Wikipedia.
Wikipedia, how it works? It is free of cost. You can search anything on the Wikipedia, but then how it works and how it creates its database. It is a kind of intermediary where people can go and add on to the information. Next is the merchant model. Merchant model means where you are just allowing people to sell something to the customers. For example, Amazon. Here Amazon is working on both the models. एक तो brokerage model भी है जिसमें दो कुछ sellers हैं कुछ customers हैं और वो दोनों आपस में transact कर रहे हैं over that platform. At the same time, they are also having their own products. So that is why it is known as the merchant model. Next, we have the manufacturer. Manufacturer में आप Amazon भी ले सकते हैं because they are also manufacturing some of the products जो Amazon के खुद के products हैं. Another example can be Dell. Dell, अगर आप Dell की वेबसाइट पे जाते हैं, it is just online storefront. तो जो खुद ही मैन्युफैक्चर करके खुद ही बेच रहा है, this model is known as the manufacturing model. Next is the virtual community. Virtual community means when you are involved in a conversation with others. Normal communities में क्या होता है, आप कहीं जाकर बैठ गए, आपने बात की, अपने विचारों का आदान प्रदान किया. Similarly, we have virtual communities when you become a part of that community. For example, आजकल कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे चल रहे हैं like we have R. अब R में हमारी एक कम्युनिटी होती है जिसमें लोग कोड्स बना के खुद उसमें अपलोड करते हैं and they communicate to each other and they work together in developing some of the codes together. तो इस तरीके की कुछ कम्युनिटीज होती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं एंड वो सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों के लिए होती हैं. नेक्स्ट वी हैव द सब्सक्रिप्शन मॉडल. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया, Amazon का ले लिया, डिज्नी हॉटस्टार का ले लिया एंड सो ऑन. एंड लास्ट वी हैव द यूटिलिटी सर्विसेज. सो जो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं या एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो आपको सर्विसेज देते हैं जो वर्चुअल सर्विसेज होती हैं. इंटरनेट को आप देख नहीं सकते, एप्लीकेशन आपको कोई दिया आपको देख नहीं सकते, but it is in the soft form, so that is known as the utility. So these are some other models that are prevailing these days.